Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter motion in a plane. In this video we will study about the direction cosines. Okay, now here we have the term cosine. It is that trigonometric ratio which represents cos. Okay, so here if we have a vector and that vector makes an angle with x-axis, y-axis and z-axis. All three angles are different. Then the cosine of that angles that represents the direction cosines. और simply आप कह सकते हो कि हमारे पास जो वेक्टर है उसका डिफरेंट डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ cos. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. मतलब हमें वेक्टर को स्प्लिट करना अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, तो वहां पर वो जो स्प्लिटिंग है वो रिप्रेजेंट करता है उसका इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो हमें अगर 3D में उसको रिप्रेजेंट करना हो और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ cos थीटा. ओके, हियर आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. हमारे पास ये तीन डिफरेंट एक्सिस है. आई हैव दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. लेट मी अज्यूम दैट आई हैव अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड बीटा with the y-axis and that is making an angle of gamma with the z-axis. Okay, so now here we have to represent the direction cosines of this vector A. Okay, so I can write this cos alpha, cos beta and cos gamma. These all are the direction cosines. और अगर हमको यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकालनी है, so I can write this cos alpha that is equals to base and the hypotenuse. Okay, here this is the perpendicular and along the x-axis, or I can assume up to this point we have ax and up to this point we have ay, and for the third axis that is in 3D we can assume that the third point here that is az. So I can write ax, ay, az. These are the coordinates for this vector A. मतलब मुझे यहाँ पर अगर इस वेक्टर को लिखना है वेक्टर ए, आई कैन राइट इट एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी हैव कंपोनेंट ए एक्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस वी हैव कंपोनेंट ए वाई एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस वी हैव कंपोनेंट ए जेड. Okay, now here if I want to find the value of cos alpha, that is equals to base upon hypotenuse. Here for this cos alpha I have to consider this triangle. Here base I have this ax upon hypotenuse. Now here hypotenuse I can consider this distance and it is the vector A and its magnitude I can consider simply A, or I can write here it as ax by A. Okay, in the same way cos beta, that is again for this particular triangle and that is based upon hypotenuse. यहाँ पर base कितना हो जाएगा, that is ay and hypotenuse that will be same as A. In the same way for cos gamma, that is the angle which is making with the z axis, so for that I can write it as az by A. Okay, here in this direction cosines, this cos alpha that is represented by L, this cos beta that is represented by M and this cos gamma that is represented by N. So this L, M and N, they represent the direction cosines. This L that represents cos of alpha, that is the angle with the x axis. Similarly M that is cos beta, that is the angle with the y axis, and this N that is cos gamma, that is the angle with the z axis. And here we have the limits कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा, they are from 0 to pi. Okay, so this is all about the direction cosines which represents the contribution of the vectors along the three different axes.